This is Akashvani. We now bring you a radio report on the 54th International Film Festival of India being organized in Panaji, Goa. चलती फिरती हंसती बोलती नाचती गाती तस्वीरें Goa has witnessed 3 days of dazzling, fascinating, star-studded moments at the 54th edition of the International Film Festival of India. And we bring to you all the action on day 4 of this prestigious event. The halfway mark of this edition of IFFI is here. And with the weekend just round the corner, hordes of movie lovers have found themselves indulging in the cinematic magic of the festival. Saish Deshpande brings to us his take on the films showcased in today's section of Indian Panorama. इंडियन पैनोरामा यानी भारतीय चित्रावली प्रभाग के लिए आज का दिन काफी दिलचस्प रहा। इस विभाग के जरिए कुल 8 फिल्मों का आनंद डेलीगेट्स ले पाए। इसमें 5 फीचर फिल्में तथा 3 नॉन फीचर फिल्में शामिल थी। सुबह सत्र की शुरुआत मिस्ट्री, मर्डर और रविंद्र संगीत युक्त बांग्ला फिल्म रविंद्र काव्य रहस्य से हुई। आज 2 मलयालम फिल्मों का आनंद दर्शकों ने लिया। एक थी मलिकापुरम और दूसरी न्याथान केसकोडू, जिसमें प्रमुख किरदार निभाया है लोकप्रिय अभिनेता कुंचको बोबन ने। फिल्म के निदेशक रतीश बालकृष्णन के साथ बात की जी श्याम ने। रतीश बालकृष्णा जी, आप अपनी फिल्म के बारे में सबसे पहले हमें बताइए। फिल्म का नाम नाथन केसगोडे, इंग्लिश में उसका मीनिंग है स्यूमी। इट्स अ कोर्ट रूम ड्रामा। एक कोर्ट के अंदर होता है पूरा। मोस्ट ऑफ द स्टोरी इज हैपनिंग इनसाइड अ कोर्ट। एक चोर का लाइफ में एक छोटा सा इंसिडेंट हो रहा है। वो इंसिडेंट को लेके वो कोर्ट में जा रहा है। वो कोर्ट केस आखिर में एमएलए की तरफ जा रहा है और चोर वर्सेस एमएलए कोर्ट में केस चल रहा है। आखिर में जस्टिस जीत रहा है। तो वो है मेरा फिल्म का छोटा सा कहानी। एक सैटिरिकल वे में बताया हुआ कहानी है। एंड 1.5 साल के बाद यहाँ IFFI में सेलेक्ट हुआ है। इट्स अ वेरी 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 प्राउड थिंग। एक फिल्म मेकर के लिए एक बहुत बड़ा मामला होता है। तो वो 2.5 घंटा वो लोग एंजॉय भी कर लेते हैं और जब फिल्म खत्म होने के बाद उन लोगों का मन में वो फिल्म क्या बताना चाह रहा था वो स्ट्राइक करता है, ताकि कोई भी टाइम में उन लोगों को बोरिंग नहीं हो जाए। जी। तो वो मेरा एक अटेम्प्ट है। कोई भी एक सोशल इश्यू हो या कोई भी एक इमोशनल स्टोरी हो, जो भी बताएगा ऑडियंस कोई भी टाइम में डाउन नहीं होना चाहिए, ताकि वो लोग को बोरिंग नहीं होना चाहिए। शर्मिला जी टागोर और मनोज बाजपेयी अभिनीत गुलमोहर ये हिंदी फिल्म दर्शकों को बेहद पसंद आ गई। मनोज बाजपेयी की आज 2 हिंदी फिल्में दर्शाई गई, जिसमें दूसरी फिल्म थी एक सेशन कोर्ट लॉयर की सच्ची कहानी पर आधारित सिर्फ एक बंदा काफी है। जाहिर है मनोज बाजपेयी जी आज छाए रहे। कल शाम स्क्रीन हुई इंडियन पैनोरामा की फिल्म साना लोगों को पसंद आई है और अपने विमेन ओरिएंटेड सब्जेक्ट को लेकर ये काफी चर्चा में भी रही। साना फिल्म की आर्टिस्ट पूजा भट्ट और राधिका मदन इन्होंने आकाशवाणी के साथ बात की। Well, I think that first of all, being in the Indian panorama is a very big deal. I remember my father's film Arth was in the Indian panorama, Janam was in the Indian panorama, Sadak was in the Indian panorama, and now to kind of be in a film like Sana, which is here and chosen for the Indian panorama, for me is a privilege, and I'm glad that it takes forward. You know, the reason I became a producer with Tamanna was because for me it was important to kind of make films that were relevant to who, relevant to me, relevant to I knew a lot of people out there, and not just look at it from a perspective of as a business person. For the fact that IFFI has given it this kind of platform and chosen Sana, you know, so I think that being here is wonderful, but I think from here this is a great trampoline starting point to say that this is our Indian debut and we do it in this manner with such a privileged platform, but from here onward the struggle and journey really begins. तो आपने इस रोल को खास करके जो भूमिका है इसको अदा करने के लिए किस तरह की तैयारी की, और आपने जब रोल किया और जब उसे स्क्रीन पर देखा, लोगों की प्रतिक्रियाएं देखी, तो आपको कैसा लगा?
जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं काफ़ी प्राइड लेती हूँ इस बात पे कि मैं बहुत अच्छी स्टूडेंट हूँ। कोशिश करती हूँ ज़िंदगी की भी स्टूडेंट रहने की और अपने काम की भी। मैं जब भी किसी नए किरदार के लिए प्रिपेयर करती हूँ, किसी भी नए प्रोजेक्ट में जाती हूँ, मेरा एक ही मिशन रहता है कि मैं सरेंडर कर दूँ। जो भी मेरी एक बोलते हैं ना कि बकेट भरी हुई है, उसको खाली करके जाऊँ और जितना अब्जॉर्ब कर सकती हूँ अपने निर्देशक से वो अब्जॉर्ब कर लूँ। सना के लिए भी हमने बहुत सारी वर्कशॉप्स करी। मैंने काफ़ी अपने थॉट प्रोसेसेस को चैलेंज किया, खुद में झांक कर देखा। जब खुद में झांका तो सना में झांकने का मौका मिला। जो सना ने सीखा वो खुद सीखी और ऐसा एक्सपीरियंस जिंदगी में बहुत कम मिलता है जहाँ पर आप एक अलग कलाकार बन के निकलते हैं और ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलना बहुत सौभाग्य की बात है। एंड होप करती हूँ कि ऑडियंस को मैं अलग अलग किरदारों से एंटरटेन कर पाऊँ। आज भारतीय चित्रावली प्रभाग में फीचर फिल्मों के अलावा जिन नॉन फीचर फिल्म्स का प्रदर्शन हुआ वे हैं बासन, डोगरी भाषा में बनी छुपी रोह, जो लीला राजू और उनके बेटे अब्बू की कहानी है, और प्रवीण सेल्वम द्वारा निर्देशित तमिल डॉक्यूमेंट्री चेंजिंग लैंडस्केप्स। तो मित्रों, इंडियन पैनोरामा सेगमेंट में आज इतना ही। Velma Fernandez gives us insight into one of the restored classic films featured in this edition of the IFFI. The restored classic that was shown a little earlier today was an epic. The 1965 Shadows of Forgotten Ancestors is a masterpiece of magical realism in which actual events are interspersed with dreamlike passages that place the real world in a state of constant flux. This, a Sergei Paranjanov's movie, transports the viewer into a deeply romantic yet brutal world where life is uncertain and death can happen in a matter of an instant. Based on a 19-level novel by Ukrainian writer Kostyubinsky, Shadows of Forgotten Ancestors is a Romeo and Juliet story in which the protagonist, two star-crossed lovers, hope to rebel against their warring families. The music is written by the composer Myroslav Skyorik, who wrote the score inspired by Ukrainian Hutsal folk culture. The haunting Ukrainian folk music contributes to the film's grandeur and is considered to be one of Skyorik's greatest film scores. I was happy to meet a foreign delegate who was down here to watch this movie. Where have you come from? I've come, this time from long ways. I traveled through Madrid from Auckland, which is where I'm based. Fantastic. And did you enjoy this movie? It's a restored classic, Shadows of Forgotten Ancestors. I enjoyed it. It's fascinating if you especially enjoy fantasy and myth. I enjoyed watching the segments and hearing spoken Russian with English subtitles. It can get a bit confusing because there's stops and starts and you go forward and backward in time. Knowing something about Russian culture helps with understanding the images. But it's about a time way before modern Russia ever existed, and it's a collection of folk tales about the culture and the country. It's really quite beautiful. Thank you so much for talking to us, Jordan Smithers, and enjoy your stay in Goa. Thanks again. Sujit Bansuri was in conversation with the chairman of the Nepal Film Development Board. So listeners, we are meeting with Nepali superstar, actor and producer Bhuvan Kesi. Hi. Hello, hi. What would you like to narrate about the Nepali film promotion policies? Actually, I'm from Nepal. I'm an actor, producer, director, and chairman in Nepal Film Development Board just now. We came here for the promoting the Nepali movie for international level, and we'd like to, if people wants to make a joint venture film with Nepal, India, Nepal, some other country, we'll support them. Nepal is just such a beautiful country, and there are so many very beautiful Himalayas over there. And if a foreigner they wants to shoot in Nepal, we'll provide them the good technicians, equipment. And we'll support them from our government for every producers and act and everybody. So we'll have to support them. G. Sham caught up with the cast of the film Hari Om Hari. हीरो है, हीरोइन है,
दो हीरोइंस हैं यहाँ पर। फिल्म त्रिकोण की है ये, और बड़ी रोचक सी, हमने इसका जो ट्रेलर देखा है वो ये साबित करता है कि सिद्धार्थ रंधेरिया की ये फिल्म है, और निसर्ग वैद्य हैं इसमें, संजय छब्बरिया हैं, रौनक कामदार हैं, व्योमा नंदी हैं, मल्हार राठौड़ हैं, निकिता जोशी हैं। और अब जो है हम फिल्म को आपके लिए ऑडियो के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं। यहाँ पर हम इस फिल्म के हीरो से पूछना चाहेंगे कि इस फिल्म की कहानी क्या है और आपका रोल क्या है, और साथ ही साथ अपने साथ की जो दोनों हीरोइंस हैं उनके बारे में भी आप हमें बताइए, और वो तो है ही मुस्कुरा रही हैं। सर नमस्कार, जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं। सो ये फिल्म है हरि ओम हरि, एक लव ट्रायंगल की स्टोरी है, और इसमें जो मेन मुद्दा है वो ये है कि क्या आपका प्रेमी आपका सबसे अच्छा दोस्त हो सकता है। तो इसी एक वन लाइनर पे ये पूरी स्टोरी आधारित है, और कैसे जो मेरा कैरेक्टर है ओम, उसकी लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं। एक सरप्राइज कैरेक्टर बन के सिद्धार्थ सर के कैरेक्टर की एंट्री होती है, वो मेरी ज़िंदगी में पूरा ऊपर नीचे उथल पुथल करके सब बदल देते हैं, और उसमें से काफ़ी सारा ह्यूमर और काफ़ी सारा इमोशन जनरेट होता है। सो एक मॉडर्न यूथफुल प्रॉब्लम की सिचुएशन पे ये फिल्म है, और आई एम श्योर कि जितने भी लोग देखेंगे उन्हें बहुत मज़ा आएगा। नमस्कार, मेरा नाम है व्योमा नंदी। मेरा रोल विनी का किरदार मैं प्ले कर रही हूँ ये फिल्म में, और वही जो हमने बहुत सारी हिंदी फिल्मों में सुना है कि प्यार दोस्ती है, तो क्या प्यार सच में दोस्ती है या नहीं है, या हो सकता है, इसी मुद्दे पे आधारित है ये फिल्म, और बहुत ही यूथफुल और फ्रेश है। आई थिंक हर कोई जो ये फिल्म देखेगा कहीं ना कहीं उसको लगेगा कि ये उसकी कहानी है, या उसको भी ऐसे कभी सोचना चाहिए था, या यही वो सोच रहा था। ये तीनों में से कोई एक सिनेरियो में वो रिलेट कर सकता है, और बहुत ही मजा आएगा, इसकी गारंटी तो मैं पक्का दे सकती हूँ। गारंटी प्राप्त करके हम मल्हार राठौड़ की ओर आ रहे हैं। मेरा नाम मल्हार राठौड़ है, और इसमें मैं मायरा का किरदार निभा रही हूँ। तो मायरा का रोल बेसिकली ये मैं कबाब में हड्डी हूँ इनके बीच में। तो ये एक रोम कॉम है, बट इसमें बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं जो आप मूवी देखेंगे तभी आपको पता चलेगा। और इसमें मैं क्या कहूँ, बहुत मज़ेदार फिल्म है। आप सिर्फ सबटाइटल्स का एक बैरियर ओवरकम करोगे तो आपको भी बड़ा मज़ा आएगा। क्या बात है, आपसे बातचीत करके भी बहुत मज़ा है, लेकिन यहाँ पर जो महत्वपूर्ण हिस्सा है फिल्म का, एक निर्माता, एक निर्देशक और ख़ास करके दर्शक तो उससे जुड़े होते ही हैं। फिलहाल मैं जो निर्देशक हैं उनसे बातचीत करना चाहूँगा। आप हैं निसर्ग वैद्य जी, और गुजराती ये फिल्म जो है अपने ट्रेलर से ही लोगों को अपने मोहपाश में बांध लेती है। हरि ओम हरि, क्या कहेंगे आप? मैं तो होप कर रहा हूँ कि मोक्ष पार्क में एक बार बांधे, और मैं चाहता हूँ कि सब लोग ये फिल्म देखें, सब लोग अपने पार्टनर के साथ, फ्रेंड्स के साथ, कॉलेज के बच्चे, सब लोग को, हर एज के, 3 साल के बच्चे लेके 60 ईयर के, सब लोग ये फिल्म देखें, एंजॉय करें, कुछ सीखें नया और मज़े करें। ख्याल कैसे आया इस फिल्म को बनाने का, संक्षेप में बताएंगे? हमेशा से मुझे जो कहानियाँ एवरीडे लाइफ को टच करती है, बट उसमें हम लोग कुछ अगर एक एंगल ऐड कर सकते हैं, उसको अगर एक ऐसी जगह लेके जा सकते हैं जहाँ जिस दिशा में हम सोचते नहीं हैं, और कहीं से आपको एक कहानी हाथ आ जाए जो जिसका एंड में एक मैसेज देता है। अभी मैसेज का मतलब ये नहीं कि कुछ सिखाओ लोगों को, प्रीच करो, वी आर नॉट हियर टू प्रीच, बट एट द सेम टाइम कुछ कहानियाँ ऐसी होती जो आपको कुछ कह जाती है, वो कहना इंपॉर्टेंट है, और ये वैसी कहानी थी जो कुछ कहना चाहती थी। तो एक बार वो आ चुका, एक बार आ गया, फिर रुकने का नाम नहीं था। फिर इट वाज लाइक वी हैव टू डू दिस एंड मेक द बेस्ट वर्जन ऑफ इट। Priyanka Mayapur had a chat with Suman Farooq, the actor from the Bangladeshi film Ferishte. Can you tell us a little bit about the character of your film? The character of the film, I acted as a rickshaw puller man, but which is completely opposite of my regular life. In reality, in real life, I am a garment businessman, but I had to act for a rickshaw-man, and I had to adapt myself, the body language, where they drive rickshaw, I had to learn everything. Basically, I love film. I'm a film lover from the childhood, and film was inside me always. I was dreaming one day if I have a chance, I will be acting into the film. So, by the grace of Allah, the chances has come. Then I was always talking to my wives. She's Dr. Shahin Sultana. So I was saying that somebody offered me for film and all these things. She said, okay, if you like, you go for film. Then I prepared myself. I had to
go for gym and all these things to set up myself for acting. And I read a lot of books. I went, since because of the time pressure, I bring one or two of my friends who are into the acting. So they come to my house, we talk about actings and all. But I'm not a professional actor, and they did not want it. For Ferriste, they did not want it. Basically, for me, my character, they did not want it as a professional actors. They wanted a person who is not acting, but he can adapt the character himself. So for this journey, I had to learn the rickshaw. Every day after coming from the office, I bought a rickshaw basically, and it was sitting in my house. I kept it. So after 9 o'clock in the evening, I go on the street and I drive myself. And I took passenger in my rickshaw as well. So this was a good journey. Later on, the Iranian team came and they took me interview. I mean, I had to take them into the rickshaw also, and I had to drive them, and I had to prove them I can do professionally. So this was like this, yeah. Okay, one message that you'd want the viewers to take away from this film. For my audience who see this movie, I want to tell them that I'm not a professional actor, but I acted from my heart, and I wanted to be the person where my character is. So I tried my best. The area of Darya Sangam in the campus of Kala Academy, Panji is featuring a digital exhibition on Indian cinema. Rajesh Bhatt spoke to Dilip Singh Parmar of Central Bureau of Communication, Indore, about the same. सभी श्रोताओं को नमस्कार। मैं दिलीप सिंह परमार, केंद्रीय संचार ब्यूरो सूचना और प्रसारण मंत्रालय इंदौर से। केंद्रीय संचार ब्यूरो सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से यहाँ पर एक डिजिटल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। ये प्रदर्शनी अपने आप में एक अनूठी है। इसमें भारतीय सिनेमा को शुरुआत से लेकर आज तक क्या क्या उसमें परिवर्तन हुए, वो जब फिल्म स्टार्ट हुई थी, जब फिल्में बोलती नहीं थी, सिर्फ चित्र के माध्यम से संदेश दिए जाते थे, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर बताया गया है। इसमें हर एक चीज़ों को लिया गया है, हर एक वर्ग को लिया गया है कि यूथ्स की क्या भूमिका रही है, यूथ्स किस तरह की फिल्मों के माध्यम से अपना संदेश समाज को दे रहे हैं। महिलाओं को विशेषकर इसमें लिया गया कि महिलाओं का इम्पोर्टेंस कितना रहा है सिनेमा में, चाहे उनके फिल्मांकन को लेकर हो, डायरेक्शन को लेकर हो या उनकी एक्टिंग को लेकर हो। तो इसमें तमाम तरह की भारतीय सिनेमा को लेकर इसमें डिजिटल मोड में सारी चीज़ इसमें समझाने का प्रयास किया गया है कि फिल्में हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण रही हैं और आज भी कितना महत्व रखती है समाज के परिवर्तन लाने में। साथ ही साथ इसमें हमने कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के कुछ महत्वपूर्ण फ्लैगशिप प्रोग्राम्स को भी रखा है, जिसमें सेल्फी विद पीएम ये एक हमारा एक पोर्शन है, जिसमें कुछ फ्लैगशिप प्रोग्राम्स है। उसमें जाके पब्लिक जाती है और खड़े होकर माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ में उनका फ़ोटो सेशन होता है और उनको फ़ोटो तत्काल ही उनके मोबाइल पर व्हाट्सएप के जरिए उनको प्रदान किया जाता है, ताकि वो अपने सोशल मीडिया पर या जहाँ भी उसका उपयोग करना चाहें करें। सुबह 10 बजे से आरंभ होकर शाम 6:30 बजे तक ये प्रदर्शनी आम लोगों के लिए खुली है। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई पास की आवश्यकता नहीं है। तो एक लेजर शो भी होता है जिसमें साउंड के साथ एक लेजर शो चलता है और साथ ही साथ एक मेगा स्क्रीन पर हम एक फिल्म प्रदर्शन करते हैं जो 3 शो करते हैं हम उसके बाद, तो वो 8:30 बजे उसका समापन होता है। Sujit Bansure caught up with Vikas Kharge, the Principal Secretary of the Ministry of Cultural Affairs, Government of Maharashtra. Sir, how would you describe presence of Marathi film in IFFI 2023? Maharashtra government always supports the Marathi movie and it always gives the opportunity to present Marathi movies at different platforms. And this IFFI is one of them. Last year we also gave opportunity to Marathi movies at Cannes Festival in France. And here also we have come up with 3 Marathi movies. One is this Butterfly, another is Global Adgaon, and third is Girki. The intention behind bringing these Marathi movies and making this platform available is that they should get the global exposure. Those producers and directors, they come here, they interact with many other stakeholders here who are working in the film industry, and they get a lot of exposure. In addition to that, they also get the market. I was told by one producer of among these 3 movies that he had a collaboration with one Russian person, and he is interested to take the footage of some of his shots. Okay. So this is how they are getting some market also. So this is a good opportunity for these people to get the global platform, and they learn a lot of things from here, and it will be helpful for them for future production. Yeah, sure. Thank you.
This edition of the International Film Festival of India is even more dear to Goans, as for the first time, the festival has a Goan section, which today showcased the film Gathan, directed by Dinesh Bhosle. Here is Velma Fernandez in conversation with the director. The movie Gathan was just screened this evening. In fact, it was the first Goan movie, the opening movie of the Goan Films section to start off with a bang for us this evening, and we really thoroughly enjoyed it. And I have with me here the director of the movie Gathan, Dinesh Bhosle. Hi, sir. Hello, thank you. You have a fantastic theatre background. How did that help you in making this movie? Yeah, of course, theatre background helped me very much because in scripting, characterization of the character and building up the screenplay, if you have a background of theatre, it helps mainly because of the characterization is very important for every character, and based on the character, then the character improves and the character can perform perfectly. And thereafter, the crafting of screenplay and writing of the script. How did you choose your actors? Actors, I'm familiar with all the actors, most of the actors in Goa, and so when the script was completed, I had in mind who will play the particular character, because most of them are theatre artists from Goa, and there was no problem in casting them. How does showcasing a movie like this at such a film festival, IFFI 54, how does it help directors like you? IFFI is one of the best biggest festivals of Government of India, and many directors all over the India come here. Also, in the international global directors come here. And if happens they come to see the film, then it helps us in discussion and in materializing the new projects. Also, many producers are present during IFFI. If we convince them to see the film, then we get to opportunity to interact with them. And also the many directors from other states, regional directors come here, and we get the more opportunity to meet them and exchange ideas. Thank you so much, sir. All the very best. Dev bare karu tumka. Thank you very much. Dev bare karu. Finally, here is Brian Mendonça with what's coming up tomorrow. With the mid-fest film about dry grasses by newly built Ceylon, one realizes one is already halfway through the festival here in Goa. In the international competition category tomorrow is the Indonesian film Andragogy, which questions stereotypes of gender. Mirbin tells the tale of the ethnic conflict in Karbi, Assam in 2005. In the Indian Panorama feature film section is Mandali, a gripping tale about how the addiction of an actor affects his performance in the Ram Leela. In the non-feature film category, watch Gidh and Berupia. Pradakshina takes up the theme of widow remarriage. While they are stranded at a bus terminus, her father-in-law tries to persuade Suma to marry again. Watch the Indian premiere of the Argentine film A Ravaging Wind in the Cinema of the World section. You can also watch The Gospel of the Beast about a teenage fugitive who has killed his classmate. Not a Word from Germany is about the tenuous relationship between mother and son. Asel Zureva, a director from Kyrgyzstan, brings you God's Gift, the story of a newborn baby abandoned at the house of an elderly couple who is childless. Malqueridas is a sensitive portrayal of motherhood in prison. In Latido, two women share their pregnancy journeys. Suffocated is about a couple in a storm at sea. Bhag Milka Bhag will be showcased in the Accessible India category with Indian Sign Language. The film Let Me Go by Maxime Rapaz from Geneva will be shown in the category Best Debut Film of a Director. In Festival Kaleidoscope, watch Essential Truths of the Lake, directed by Lav Diaz. In the Mexican film Memories, Sylvia meets Saul at a high school reunion. For a slice of documontage, watch The Trial, reenacting the trial of the military juntas of Argentina. There is also the Mexican film Luto about journeying and grieving. Revenge, Our Dad the Nazi Killer is a documentary about the search for Nazis in post-World War II. In the In Conversation slot, listen to young filmmakers speak on the passion of storytelling. In another session, listen to producers sharing how one raises finance. In the UNICEF at IFFI category, you can watch Peacock Lament, a film from Sri Lanka.
And in the Restored Classics section, watch Vidyapati, made on the life of the poet saint in 1937 by Devaki Bose. That's the bouquet of films coming to you tomorrow. Happy viewing! As the sun sets on day 4 of the International Film Festival of India and movie lovers go home satiated, we wish you a good night and goodbye from Goa until we meet again tomorrow. चलती फिरती हंसती बोलती नाचती गाती तस्वीरें दुनिया के सब रंग दिखाती रूप दिखाती तस्वीरें पर्दे पर सब राजों से पर्दे को उठाती तस्वीरें ओ दिल बहलाती कभी हंसाती कभी रुलाती तस्वीरें ये हिंदुस्तानी सिनेमा ये मूवीज ये फिल्में रहती है करोड़ों के दिल में भारत के सिनेमा की है जय जयकार भारत के सिनेमा की है जय जयकार भारत के सिनेमा की है जय जयकार. You just heard a radio report on the 54th International Film Festival of India being organized in Panaji, Goa. Produced and presented by Akashvani Panaji, this broadcast came to you from the Delhi station of Akashvani.